फीफा को 500 मिलियन रिक्वेस्ट आई हैं फॉर टिकट्स टू द 2026 फीफा वर्ल्ड कप। भाई इज इन दिस क्रेजी। 500 मिलियन रिक्वेस्ट आने का मतलब ये है कि इफ वन रिक्वेस्ट हैज अराउंड 2 टिकट्स दैट दे आर डिमांडिंग, दैट वुड मीन देयर इज अ डिमांड ऑफ मोर देन 1 बिलियन टिकट्स। भाई इस दुनिया में सिर्फ 7 बिलियन लोग हैं। 1 बिलियन टिकट्स आर बीइंग डिमांडेड वर्ल्ड वाइड। 4 or 5 million is the capacity that can be maximum allotted by FIFA. अब यार होने क्या वाला है? When there is a excess demand and the supply is limited, होने ये वाला है कि there will be a lucky draw जहाँ randomly उन लोगों को बोला जाएगा how many tickets they are allotted. Now the results of this draw will be announced on or after 5th of February. So basically there are 3 possible conditions. Number 1 ये है कि या तो आपने suppose 2 टिकट्स के लिए अप्लाई करी तो आपको पूरी फुल ग्रांट हो जाए, तो आपको 2 की 2 टिकट्स मिल जाएंगी। और देर कुड बी पार्शियल अलॉटमेंट। तो एसेंशियली अगर आपने 2 टिकट्स के लिए अप्लाई करी तो आपको 1 टिकट अलॉट किया जाए, या फिर आपकी पूरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब होने ये वाला है कि नाउ रीसेलर्स विल कम इन द गेम। अब रीसेलर्स विल ऑब्वियसली stack up the prices, and the base prices of FIFA are lower than what the resellers are already charging on, let's say, platforms like StubHub. So FIFA will have a chance to then justify ki why the prices were already set high in the first place. Ridiculous prices were set high in the first place, which is a debate which is ongoing amongst all of us fans कि how do we then democratize sport? कैसे affordable बन सकता है for आम जनता to go and watch such a spectacle, such a tournament which is high in demand. Now listening to this is even more crazier. The 5 fixtures which are the highest in demand. Number 1, Portugal versus Colombia. Number 2 is Mexico versus Korea Republic. Number 3 is the FIFA World Cup final. Number 4 is the World Cup opener, which is Mexico versus South Africa. And number 5 is likely Portugal or Colombia against the runners up of the England group. So basically, none of these 5 fixtures are those which I had in mind except the World Cup final. Absolutely bizarre, unpredictable. But yes, let your friend know who has applied for tickets to the FIFA World Cup, or even if they haven't applied, let them know what the hell is happening with FIFA and tickets to this year's FIFA World Cup.